Assalamu alaikum ji. My name is Muneeb और मैं CEO founder हूँ OneByte का. OneByte, sorry, I don't need to use this. So OneByte started as a software services company like any other company in Pakistan. We started back around 9 years back, and we focused on app development at the time. And then we gradually grew our services into different things. But over the years, we finally made a pivot from a software services company to just focus on a product called Eon Health. And today, OneByte is an engineering arm. Like OneByte Pakistan is just an engineering arm for the product called Eon Health. Eon is around $300 to $400 million company as its last valuation. We are deployed in more than 700 hospitals in the US. We work in a lot of domain. It's a very cloud native product which works in a very big niche. It's called हम क्या करते हैं अभी इस टॉक में आपको थोड़ा सा और मिलेगा इनसाइट बट हम क्या करते हैं हम एक रेडियोलॉजी रिपोर्ट लेते हैं और उससे प्रेडिक्ट करते हैं कि इफ़ यू आर कैंडिडेट to be in a screening patient for lung cancers, pancreatic cancers, breast cancers, and other cancers. It's a very niche product. It's a very technical product. So that's why we have a lot of teams in Pakistan of highly skilled engineers working within DevOps, data science, QA, machine learning. We are also going towards CAD, Gen AI products too. And this is the story of what the OneByte is. We're here today just to meet you guys people because we have a lot of vacancies and openings as we scale in 2024. So come meet us outside. We have a booth. We do have some swag that we're going to give out. And so I'll introduce Murtaza here. Murtaza is our data scientist and now he's grown into being the manager of success and customer support at OneByte. So he'll give you an insight into what computational linguistics is and how it's different from NLP, which is natural language processing models, and why do we use it as of today in our product. Thank you, guys. Thank you. Assalamu alaikum. Thanks, Muneeb, for the introduction. और मुनीब ने क्योंकि इंट्रोडक्शन दे ही दिया तो I will just quickly jump towards the slide so that हम इस टॉपिक को जल्द से जल्द कवर कर सकें और मैक्सिमम कवर कर सकें. Okay, so what is computational linguistics? Quickly, किसी को idea तो मुझे बताए थोड़ा सा. Anyone? Okay, I will proceed. So computational linguistics is basically linguistics के rules को इस तरह से apply करना with computation, mathematics and CS कि आप किसी भी computer program को या computer को सिखा सकें, उसको language के बारे में बता सकें, वो language को understand करके उसमें से information extract कर सके या उसकी basis पे कोई decision making कर सके. NLP से this is a little different in a sense because in NLP there is a subdomain which is called natural language understanding and generation. उसके अंदर computational linguistics use होती है, but in computational linguistics we go through different domains जिसमें machine translation से लेके even we go through other domains as well that I will show you in next slides. So computational linguistics basically goes through different domains and it expands over different domains including machine translation जिसमें there are different like English to Spanish, English to French translations that are developed by Google as well, and then automatic speech recognition, text to speech convergence, information extraction, natural language generation, and some ontology learnings as well. I'm missing some of the things. I'm trying to cover most of the important things in these slides. So going forward, my focus would be mostly on information extraction that was used in our model, the computational linguistics model that we developed to identify early cancers in patients through radiology reports. So before diving into the model, first I will try to explain a little about linguistics, what are the key aspects of linguistics and what does they mean. So for example, phonology जो basically study related to sounds and it is used in speech processing and things related to speech processing in NLP and computational linguistics. Morphology is basically the structure of the words combined together to make a correct sentence or grammatically correct sentence. So morphology उसके around जो है वो घूमती है. Syntax की अगर हम बात करें तो syntax is basically putting together the words into specific
words and phrases into specific structure to make a sense out of it or make a complete sentence. And then semantics is related to the context of those texts and the placement of it. And pragmatics is basically the study of symbols and signs in any language. So some of the challenges that we face in linguistics and where we are dealing with linguistics and computational linguistics are ambiguity. So for example, on the left-hand side, if you see this example, I saw her duck. So there could be two meanings of that. And similarly, the chicken is ready to eat. There are two meanings to that. So there is an ambiguity between sentences, and to understand that, we need to explain that to computer program as well, and to program it in a way that it understands the difference of those two sentences. And then in co-reference is basically to co-refer between two sentences. So for example, in one sentence a noun is used, and then that specific object or anything is referred to in the next sentence with a pronoun. The program should be able to understand that it is being referred now. Another two challenges are the understanding of syntax and semantics that I've already told you, and the normalization. So in normalization, what we usually do is a text could be a free text with a lot of you can say garbage values, or the values that are not required for you, or some special characters. You need to trim those down and normalize them to make it consumable for yourself, and add some format to it as well. So for example, highlighting the headings, keep separating out the important section in the text to identify the relevant information. And these are the building blocks that we actually listed down, and that helped us build the computational linguistic models that we are using in the product. And so these building blocks I will just go through quickly. Tokenization is basically breaking down the text into small tokens or even words. And then lemmatization is keep maintaining a list of all the words in a document, but the root words, not the extracted words out of it. And then sentence boundary detection, just to detect the boundary within two sentences, when a specific sentence is ending, when a specific paragraph is ending, and the new one is getting started, and things like that. Name entity recognition and dependency parsing. So name entity recognition is basically identifying all the entities, all the relevant entities in a text. For example, any organization name, any disease, any abnormality, and things like that. And named entity disambiguation is basically identifying the difference between similar entities. So for example, apple could be a fruit and apple could be a company. So things like that. And then relation extraction between two sentences. Temporality detection and normalization is basically, again, that I have discussed, that identifying where the sentence is ending and then normalizing the text to consume it. And template filling basically in the end is basically putting together everything that has been extracted into a format that is usable by your software or your system. So we use spaCy, just as a quick introduction to spaCy, we use the spaCy library which came after NLTK, and it's an advanced form. NLTK में हम regex और इस तरह की चीज़ें यूज़ करते थे. spaCy में there are different things, और spaCy हमने प्रेफर इस वजह से किया कि इसकी इंटीग्रिटी और इंटरऑपरेटेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है. ये पाइथन की डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, टेंसरफ्लो वगैरह, उनके साथ इंटीग्रेट भी हो जाती है, इसकी स्पीड भी तेज़ है, और हमें इसके ऊपर बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे थे. और इसकी थोड़ी सी वर्किंग इस तरह से है कि ये हर एक वर्ड को जो एक टोकन कंसीडर करता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को इट कंसीडर एज अ स्पैन, और एक पूरा जो पैराग्राफ होगा, टेक्स्ट होगा, दैट विल बी अ डॉक्यूमेंट. सो गोइंग फॉरवर्ड मैं क्विकली बताता हूँ हमने किया क्या. सो हमारा गोल ये था कि हमने अर्ली कैंसर डिटेक्शन करनी थी, और हमारे पास रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स आ रही थी. अब रेडियोलॉजी रिपोर्ट में जो हमारे पास चैलेंज ये था कि जो टेक्स्ट होता है वो फ्री टेक्स्ट होता है, और उसके अंदर कोई फॉर्मेट नहीं होता. तो हमने डिफरेंट जो है वो मॉडल्स, क्लासिफिकेशन मॉडल्स, बैग ऑफ वर्ड टेक्निक्स और डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई की. उसके अंदर हमारे पास जो एक्यूरेसी थी वो 70%, 75%, मैक्सिमम 80% को टच करनी थी. बट हमें यूज़ केस जो हमारा था उसके अंदर एटलीस्ट 96 to 97% एक्यूरेसी हमें चाहिए थी, क्योंकि वो कैंसर डिटेक्शन है, और वी डू नॉट मिस द यूज़ केसेस जहाँ पे कोई कैंसर पेशेंट जो है वो हमसे मिस हो जाए. तो हमने किया ये, हमने 20,000 रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स को लिया, और उसके हमने ऊपर उसकी जो लिंग्विस्टिक्स की जो हमने सारी चीज़ें भी पढ़ी हैं उसको गैदर करने के लिए, उसके रूल्स बनाने के लिए कि कौन सी टर्म्स हमें चाहिए होंगी, चीज़ें चाहिए होंगी, हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें
एक जो है वो टेक्स्ट के अंदर किसी भी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑर्गन पता करना है, उसकी एबनॉर्मेलिटी पता करनी है, उसके अराउंड मेजरमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पता करनी है। उसके लिए हमने रूल्स के लिए FML ऑन्टोलॉजी है जो कि फंक्शनल मॉडल ऑफ एनाटमी है, ओपन सोर्स अवेलेबल है, उसके साथ रेडलेक्स लाइब्रेरी को और हमारे जो इंटरनल एक्सपर्ट्स थे इस डोमेन के उनकी नॉलेज को यूज़ करते हुए रूल्स को आइडेंटिफाई किया, रूल्स को बनाया, एक नॉलेज बेस को बनाया और दैन उसके ऊपर हमने spaCy को यूज़ करते हुए सारी जो हमने अभी टेक्निक्स पीछे मैंने थोड़ी सी ब्रीफली बताई हैं उनको उसके थ्रू हमने आइडेंटिफाई किया। तो करंटली होता ही है कि मॉडल किसी भी रेडियोलॉजी रिपोर्ट के अंदर से फॉर एग्जांपल अगर हमने डिटेक्ट करना है कि उसको में लंग कैंसर है या नहीं, वो जाके देखता है कि हिस्ट्री उसका एक स्पेसिफिक 2-3 सेक्शंस होते हैं, रिजल्ट का सेक्शन है, इंप्रेशन सेक्शन है, जिसमें से जाके वो आइडेंटिफाई करता है कि बेसिकली यहाँ पर जो ऑर्गन है वो लंग है उसकी कहाँ पे बात हो रही है, दैन उसमें एबनॉर्मेलिटी कौन सी है और दैन उसके अराउंड मेजरमेंट्स क्या है। फॉर एग्जांपल सिस्ट है तो वो किस साइज़ की है, उसका शेप क्या है, उसका मार्जिन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस तरह की चीज़ें। जब ये सारा कुछ आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसमें से वो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सट्रैक्ट करता है और फिर वो आउटपुट कर देता है। और ये बेसिकली ये जो मॉडल है इट्स अ ब्रेन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज़ रनिंग इन US एज टोल्ड बाय मुनीब इन मोर देन 800 हॉस्पिटल्स राइट नाउ और सक्सेसफुली वी आर एबल टू इम्पैक्ट अराउंड 50 to 55,000 पेशेंट्स ईयरली। ये अभी का नंबर है, इट विल इम्प्रूव गोइंग फॉरवर्ड एंड सेविंग numbers of life in US and the best part is that everything around this model and the technology is built in Pakistan. So yeah, thank you. इसके अलावा किसी ने अगर थोड़ी सी इस पर डीप डाइव करनी है, इसके अराउंड कन्वर्जेशन करनी है, ऑब्वियसली एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन तो मैं नहीं बता सकूंगा ड्यू टू दी NDA और क्योंकि प्रोप्राइटरी हमारी जो है वो टेक्नोलॉजी है। सो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन OneByte's बूथ एंड वी कैन डिस्कस एनीथिंग अराउंड इट। थैंक यू।